Recording in progress. A very warm good morning to everyone assembled here today in this online platform. I, Dr. Rekha Bish, on behalf of Indore Institute of Pharmacy, would like to welcome you all in this 2 days National E-Conference on Translational Research for Nano Medicines, organized by Indore Institute of Pharmacy in association with Indian Pharmacy Graduate Association and sponsored by All India Council for Technical Education, New Delhi. Ladies and gentlemen, today we are delighted to have our Honorable Director General of IIST, IIP, IIMR, Shri Arun S. Bhatnagar Sir, as our patron. Honorable President, Pharmacy Council of India, Dr. Montu Kumar Patel, is gracing the occasion as our chief guest. We are honored to have Dr. Atul Nasa, President, IPGA India, as our guest of honor for this occasion. Dr. Arun Garg, General Secretary, IPGA India, and Dr. Karunakar Shukla, President, IPGA MP State Branch, are gracing the occasion as our special guests. Among the eminent speakers today, we have Dr. N.K. Jain, ex-professor, head, Dr. H.S. Kaur Vishwavidyalaya Sagar, MP, Dr. Sanjay Kumar Jain, scientist F and head, molecular biology, NIREH, Bhopal, Dr. Pradyuman Kumar Mishra, professor, Dr. H.S. Kaur Vishwavidyalaya Sagar, MP, Dr. Sanyog Jain, associate professor, Naipar, Mohali, Dr. Rakesh Kumar Tikade, associate professor, Naipar, Ahmedabad. We are also pleased to welcome Dr. Keshav Patidar, principal, IIST, Dr. Manish Mittal, principal, IIMR, all the respected HODs, faculty members, and dear participants. We are deeply honored to welcome you all on this great occasion. Thank you all for giving your precious and prized time. Now, I would request everybody to pay our gratitude to Ma Saraswati by offering her a prayer and seek for her blessings to make this event a grand and successful event.
In the present day scenario, where COVID-19 has halted the wheel of humanity, scientific research and pharmacy industry is at a new high, wherein translational research is thought to be the way ahead in terms of new vaccine development and new pharmacotherapy. The use of nanotechnology in medicine is predicted to have a major impact in prevention, diagnosis, and treatment of disease, especially via development of nano medicines. This approach aims to increase therapeutic efficacy while reducing the toxicity, but for moving from bench to bedside, several challenges need to be addressed. This conference shall provide a platform for experts and eminent scientists to put forth current trends and challenges and provide potential ways for clinical translation of nano medicines. The area of focus shall include current challenges, large-scale manufacturing, intellectual property, government regulations, and cost effectiveness. Students and faculty alike can utilize this opportunity to put forth the research in the field of nanomedicine to scrutiny by experts and get maximum benefit. Thus, the event shall provide a platform for budding researchers and eminent scholars to interact. With this, moving ahead, now I would like to introduce our Honorable Director General, Shri Arun S. Bhatnagar, sir, and it's my immense pleasure to introduce him to the audience. Sir has started his career as Assistant Professor of Economics in 1975. He appeared in Civil Services exam in 1982 and got selected and joined Indian Revenue Services in the year 1983 and worked on very sensitive assignments in different parts of country. Sir has overall experience of 46 years with Income Tax Department, academia, and private sector. He also held the post of Additional Director General of National Academy of Direct Taxes. He has coordinated international engagements with foreign universities, and government has also managed various international courses and infrastructure of the academy. Sir has completed certified courses from Duke University and University of Maryland, as well as Executive MBA from IIM Bangalore. Sir has superseded the 1983 batch based on outstanding performance, and Sir has also received the prestigious award for best practices instituted by the department from Honorable Minister of State Finance. Recently, Sir has received Captains of the Industry Award for MP's Leading Business Visionaries. He has also worked in RAW on deputation and also pioneered in establishing model office in Chennai on the basis of his experience in Australian Taxation Department under UNDP program. In December 2017, he took the command of IIST Group of Institutes as a Director General. IIST witnessed a spectacular escalation in the admission in the Faculty of Engineering by 400%, while admissions in the management stream increased threefold. His hobbies are sports, meditation, and traveling, and his poetry book, Sanchetana Keshan, is about to release. Now, I would request our Honorable Director General, sir, to please address the gathering. So please, over to you. Thank you, Dr. Rekha. Today's chief guest, Dr. Montu Kumar Patel, President, Pharmacy Council of India.
Our guest of honor, Dr. Atul Nasa, President, Indian Pharmacy Graduate Association. Dr. Arun Garg, General Secretary, IPGA. Dr. Karnakar Shukla, President, IPGA, MP State Branch. Our very eminent speakers, Dr. N.K. Jain Sahab, Sanjay Kumar Jain Sahab, Mr. P.K. Mishra, Sanyog Jain, and Dr. Rakesh Kumar Ji, and other distinguished principals and faculty from various different parts of the country. First of all, I must welcome and must appreciate that Dr. Mantu Kumar Patel has given his precious time to us. Welcome you, sir, and you are a very young and dynamic president of Pharmacy Council of India, and we are looking forward to very innovative and different sort of approach in your guidance and in your mentorship. Welcome you, sir, online, and I will welcome you in our college also in future course of time. Thank you. As Dr. Kalam said once, I still remember that globally the demand is shifting towards development of sustainable system, which are technologically superior. This is the new dimension of the 21st knowledge society, what he was talking about, where science, technology, and environment will have to go together. Thus, the new age model would be a four-dimensional, bio, nano, info, and eco-based one. So all the three things combined. So next century is of nanotechnology and artificial intelligence. I don't have any doubt about it. So first of all, I must appreciate that you have picked up a very right topic, because this is the future. Nanomedicine, nanotechnology is the future. I don't want to deliberate on that topic because I am not the competent person to say something about it. But I know the importance of nanotechnology as well as the importance of nanomedicine. I would like to highlight what and little bit brief to Dr. Patel and to other distinguished faculty that what we are doing in IIST, IIP, and IIM. Few days back, Dr. Rajiv Kumar, Vice Chairman of Niti Aayog, was with us online. And when I joined here, I started this, but because of the 2 years of COVID, we are not pursuing it so vigorously, but now we are pursuing it. And it is called Samagra Samutkarsh Yojana. As we are all aware that education can be said conclusive or complete if our education system attains twin objectives. That is, prepare the students to take care of his inner self, that is, know thyself, as well as how to meet the expectation of the outer world. And when we are talking about inner self, it encompasses all the three aspects, that is body, mind, and soul. So according to me, education must bring tranquility, harmony, and blissfulness to the students, a feeling of completeness. In other words, we should prepare our students for better standard of living as well as better standard of life. Both the things should go together. I'm very happy to share in our institute, we work on these twin objectives by putting academic, personal, and academia industry efforts and initiate to enhance not only IQ, EQ, and most important SQ, spiritual quotient, as well as happiness quotient. Because life can be successful when happiness quotient is higher, along with the spiritual quotient. In our institution, we are trying our best to take care of students by adopting various best practices, that is combination of pedagogy, technology, and content. And we are having 10 dimensions of our strategy. I will not go in detail, but just to say, we are preparing our students for Industry 4.2 or 5.0. We are giving emphasis on communication, how to speak, power of words, because words are having vibrations.
So normally I'm taking sessions of 2.5 hours just to communicate with them how they should speak. Physical health, then connect with nature, their social responsibilities, encouraging students to come out from their comfortable zone, because without going to uncomfortable zone, success cannot be achieved. We have introduced a merit-based fee structure, etc., etc. But the most important point is last, that is know thyself and to be thyself willing to evolve. And we have started a Green Waves Club, which I would like to draw the attention of our president, that we are right around 2018, we have a Green Waves Club which is having 5 objectives. If my administrator can show that slide of Green Waves Club. This is our Green Waves Club, which I introduced when I joined. It is having 5 objectives. Biodiversity by planting trees, then agroforestry, organic vegetables, and water harvesting, and no to plastics. In last 4 years, we have planted around 2,000 trees in our campus. Apart from that, the 10 dimensions which I was talking about to take care of inner self is quite interesting, because this is one of the things, our unique thing, which we are emphasizing the students, and so that they can take care of their inner self. That is, they should go from limited identity to the wider identity, enhancing their perception, because according to us, today's reality is subject to today's perception and attitude. So they have to enhance their perception, and they should have a very positive attitude in life. Third, they should come out from the prison of their biased and prejudiced thinking. They should see the world without any kind of blockage or without any kind of prejudices. Next, no correlation between reward and efforts. That theory of non-attachment as propounded by our Lord Krishna in Gita. The theory of non-attachment, that they should do the work, hard work, without bothering about the results. Next is, one is the creator of his own destiny. So they should believe in their karma rather than on fate. Then how they should optimize their utilization of energy. Control of mind and power of thoughts. I'm discussing with them law of attraction as vis-a-vis law of vibrations. How to handle failures, because problems will come. We are preparing our students to go to an uncomfortable zone, and how to handle the problems, not to afraid from the problems, and how to strategy to achieve long-term goals. We are realizing them that they are supercomputers, and be in present, less in future and past, and definitely meditation and Sakshi Bhava. So this is our USP, which we are developing here, apart from our special interest groups, where we are, after each semester, our students are undergoing some kind of specialized courses. So their skills should be improved. Their skills should be enhanced, because they have to evolve, because tomorrow's world is difficult. So we have to prepare our students for the difficult circumstances and to make them a perfect personality. So I will not take much of the time, and I would like to listen all the distinguished speakers on this beautiful topic, because this is the future, and the way the nano medicine is coming up, and both translational research, there's a absolutely amazing scope. So I again welcome Dr. Patel and all our guests of honors, and I invite them to visit our campus, our green campus, and they should share their views, they should guide us, and we will be very happy to welcome them. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, sir, for your kind words and blessings. Now, moving ahead, I would request coordinator of the conference, Dr. Dinesh Kumar Mishra, Principal, Indore Institute of Pharmacy, to give an overview of the conference. Sir, please, over to you. Thank you, Dr. Rekha. Today's chief guest, Dr. Montu Kumar Patel,
President, Pharmacy Council of India, Guest of Honor, Dr. Atul Nasa, President, IPGA National, Special Guest, Dr. Arun Garg, General Secretary, IPGA National, and Dr. Karunakar Shukla, President, IPGA MP State Branch. Honorable Patron and Director General, Sri Arun S. Bhatnagar, sir, Dr. P.K. Mishra, sir, Dr. G.D. Gupta, Director, ISEP Moga, respected principals from all across the India, faculty members and delegates. Very good morning to all. I welcome you all in this AICTE sponsored 2 days e-conference being conducted on 22nd and 23rd of April 2022 at Indore Institute of Pharmacy in association with IPGA MP State Branch. You might be aware that the ultimate goal of any drug therapy is to get maximum therapeutic benefits with minimum side effects. However, this goal remains elusive at best, the tenet being lack of translation from bench to bedside. Post-COVID-19, nanomedicine is the primary area of pharmaceutical research due to its potential to provide numerous benefits like improved efficacy, improved bioavailability, dose response, targeting ability, personalization, and safety as compared to conventional or traditional medicines. There are numerous applications of nanomedicine, which basically range from medical application of nanomaterials and biological devices to nanoelectronic biosensors, and even possible future application of molecular nanotechnology, such as biological machines, and that may be helpful to cure some deadly diseases like cancer and AIDS. However, its clinical implementation is still in infancy because it is having certain challenges. The challenges are in the clinical development of nanomedicine, the biocompatibility, safety issue, the large-scale manufacturing, the government or regulatory guidelines, and ultimately the cost as compared to the traditional medicines. So therefore, there is an urgent need for translational approaches in nanomedicine research. But the question arises, what will happen? Why I'm advocating translational research? The translational research seeks to produce more meaningful, applicable results that directly benefit the human health. The aim of translational research is to translate the basic science discoveries more quickly and efficiently into practice. This kind of research may transform scientific findings or discovery from the basic laboratory, clinical, or population studies into new clinical tools, processes, or application by generating proof of principle on a compound prior to testing full-scale clinical trial, thus improving patient care and promoting public health. Keeping all these views, the present conference has focused on the current trends and challenges in clinical translation of nanomedicine, along with the potential pathways for translational development and commercialization. I hope that the delegates shall be made aware about the field of nanomedicines by our eminent speakers from all over the India, namely Dr. N.K. Jain, Professor Sanjay Kumar Jain, Dr. P.K. Mishra, Dr. Sanyug Jain, Dr. Rakesh Tikade. These renowned academicians and researchers working in the area of nanomedicines will help the delegates in the way of translational research in the field of nanomedicines. I am happy to share that more than 300 participants are registered for this conference, and the diaspora covers the state of Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Maharashtra, Punjab, Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal, and majority share belonging to the MP. Of these, more than 75 delegates are faculty from the different educational institutes. Amongst them, 5 are professors, 20 associate professors, and 50 assistant professors, research associates, and research students, and UG and PG students. And I'm also happy to share that we kept oral presentations for the faculty members and poster presentations for UG and PG students. We kept the cash prizes also for the best posters and oral presentations. Looking at the virtual nature of this meeting, we have kept all the session open for the UG, PG, and diploma students for RSTs, and they can learn from our eminent persons of this field. And we have also live streamed this conference on Facebook and YouTube to increase its outreach. And I hope these 2 days will be full of enthusiasm, the exchange of the knowledge, and it will be very fruitful for all the delegates.
So at last, thank you all. Jai Shri Mahakal. Thank you. Thank you very much, sir, for this preamble. Now, moving on, I would like to introduce our special guest, Dr. Karunakar Shukla, President, Indian Pharmacy Graduate Association, MP State Branch. Sir is the President of Indian Pharmacy Graduate Association, MP State Branch. Presently, Sir is working as Principal and Professor, College of Pharmacy, Dr. APJ Abdul Kalam University, Indore. Sir is also serving as Dean Continue Education, QIP, and Faculty Affairs, Dr. APJ Abdul Kalam University, Indore. Sir is Chairman of Jan Seva Evam Shikshan Samiti. Sir has more than 50 publications in Journal of National and International Repute. With the experience of more than 20 years, Sir has guided many students in UG conferences in the capacity of Chairman, Convener, Coordinator, and Executive Committee member. Now, I would request Dr. Karunakar Shukla, Sir, to address the gathering. So please, over to you. नमस्कार, मैं AICTE एवं IPJ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी, जिसका शीर्षक है ट्रांजिशनल रिसर्च ऑफ नैनो मेडिसिन जैसे महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर आयोजित संगोष्ठी में सर्वप्रथम उपस्थित समस्त गुरुजनों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। मैं मेरे मार्गदर्शक और IPJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला साजी को नमस्कार करता हूं। हमारे प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर मोंटू एम पटेल, जो कि अब हमारे देश में फार्मेसी के स्वर्णिम भविष्य को संवारेंगे, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक वंदन करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम क्षणों में से हमारे अल्प निवेदन पर उपस्थित होकर हमें कृतार्थ किया, हमें कृतज्ञ किया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश में। आपके प्रथम आयोजन में आपकी गर्मामय उपस्थिति को मैं सादर वंदन करता हूं, नमन करता हूं। मैं हमारे IIP यूनिवर्सिटी ग्रुप के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक भटनागर सर के बहुत प्रभावी भाषण को नमन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने हमें एक अवसर दिया कि हम सब एक मंच पर इकट्ठे होकर इतने महत्वपूर्ण विषय को चर्चा में लाएं, महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोचें और अपने विद्यार्थियों को ऐसी अवस्था में ले जाएं कि जहां पर बच्चे हमारे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सक्षम बने, विकसित हों और अपने आप को एक सुदृढ़ और संयुक्त भारत के निर्माण में अपना सहयोग दें। जैसा कि हमने देखा है पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी ने हमारे बच्चों को घरों में कैद करके उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बहुत कम कर दिया है। मैं हमारे IPJ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरुण गर्ग, जिनका समय समय पर मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, किसी भी विषय पर किसी भी समय मार्गदर्शन के लिए हम उन्हें कॉल करें, सरकार हमें मार्गदर्शन मिलता है, उनका मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे मित्र डॉक्टर दिनेश मिश्रा, युवा, ऊर्जावान और बहुत ही सक्रिय सदस्य IPJ मध्य प्रदेश स्टेट ब्रांच के, जिनका के शोध में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैनो मेडिसिन में बहुत अच्छा नाम चलता है, जो सर के बहुत अच्छे पब्लिकेशन है। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, उन्होंने इतने अच्छे आयोजन में मुझे सम्मिलित करने का मौका दिया। मैं समस्त गुरुजनों को, हमारे गुप्ता सर, जैन सर, संजय जैन सर, सब लोगों के चरणों में वंदन करते हुए, समसामयिक विषय ऐसा है नैनो मेडिसिन का कि हमारे समस्त विश्व ने जब कोरोना महामारी से हार मान ली, जब हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में
ऐसा चमत्कारिक काम किया, इतने कम समय में नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वैक्सीन का उत्पादन किया, वैक्सीन का परीक्षण किया और वैक्सीन को हमारे भारतवर्ष के नागरिकों के लिए सहज उपलब्ध करवाया। उस समय सारा विश्व चमत्कारिक रूप से हमारे भारत की ओर देखता रह गया। सबको, समस्त विश्व के लोगों को ये लगता था कि अमेरिका सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाएगा, कंप्लीट वैक्सीनेशन होगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश ने समस्त विश्व में निर्णायक रूप से समस्त विश्व का मार्गदर्शन किया, समस्त विश्व में सबसे पहले और सबसे प्रभावी वैक्सीनेशन प्रारंभ किया और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसका समस्त श्रेय मैं हमारे फार्मेसी प्रोफेशनल्स को, जिन्होंने दिन रात एक करके कोरोना वायरस की वैक्सीन का उत्पादन किया, उसका टेस्टिंग की और सारी दुनिया में अपना परचम फहराया। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में समस्त विद्यार्थियों का, समस्त छात्रों का, हमारे गुरुजनों का, हमारे समस्त प्राध्यापकों का और समस्त प्राचार्यों का, जो कि विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए हैं, सब लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सारी बातें अपनी जगह है, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को हमें देखना है, क्योंकि भारत आज एक ऐसा देश है जहाँ युवाओं का इतना विशाल समूह है, विश्व में इतना विशाल समूह कहीं नहीं। पिछले विगत 2 वर्षों में कोरोना महामारी ने हमारे युवाओं का सकारात्मक ऊर्जा को घरों में कैद करके नकारात्मक ऊर्जा में बदल दिया। मेरा सभी गुरुजनों से, सभी शिक्षकों से, सभी मार्गदर्शकों से यही निवेदन है कि हम अपने बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें, सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ाएं, सकारात्मक विचारों में ले जाएं। जो बच्चे हमारे देश की संस्कृति को, संस्कार को, जिनसे पलायन कर रहे हैं, उन संस्कृति और संस्कारों को देते हुए अपने विषय का ज्ञान उनको प्रदान करें। अपने विषय का ज्ञान बच्चों को, मैं छात्रों से आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे देश की संस्कृति और संस्कार को आप अंगीकृत करें और संस्कृति और संस्कार के साथ विश्व में आगे बढ़े। सारा विश्व आपके नेतृत्व की ओर देख रहा है, आपकी ओर देख रहा है। मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी बच्चे, हमारे छात्र हैं जो भारत का भविष्य है, वो थोड़े से कंफर्ट जोन में आ गए। मेरे प्यारे बच्चों, कंफर्ट जोन आप लोगों के लिए नहीं बना है, आपको संघर्ष करना है, आपको संघर्ष करना है, आपको संघर्ष करना है और जीतना है। आपके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, भारत का भविष्य आप लोग हो। आपको अपने जीवन में स्वर्णिम अवसर मिला हुआ है, आपको इतने अच्छे शिक्षक मिले हुए हैं, इतने अच्छे अध्यापक मिले हुए हैं, इतने अच्छे आपके माता पिता ने आपको अच्छे श्रेणी में, अच्छे विषय में अध्ययन करने के लिए भेजा है। आप, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप एकमात्र निर्णय लें, एक लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारण आपके जीवन की सफलता का प्रमुख सूत्र है। आप एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें, आप जहां जाना चाहते हैं मन में वो लक्ष्य बना लें। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कोट है कि सपने कभी बंद आंखों से नहीं देखे जाते, सपने वो पूरे होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, आप लोग भारत का भविष्य हो। आप एक लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य के प्रति, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, लक्ष्य के प्रति लक्ष्य बना के लक्ष्य के प्रति तब तक चलते रहो, तब तक चलते रहो, तब तक चलते रहो, बिना थके, जब तक कि आप लक्ष्य को पाना। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ाकर चल। मैं सभी विद्यार्थियों से आह्वान करता हूँ, सभी फार्मा प्रोफेसर से आह्वान करता हूँ कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ाकर चल। मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी मार्गदर्शकों, सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर दिनेश मिश्रा सर को, हमारे डायरेक्टर जनरल सर जो IIP के मार्गदर्शक हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। इतना अच्छा आयोजन आपने किया। हमारे IPGA MP स्टेट ब्रांच के समस्त सदस्यों को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नासा को, हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष, नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर मोहन पुटल जी को, कि आप लोगों ने हमारे अल्प निवेदन पर हमारे कार्यक्रम पधारे, बच्चों को मार्गदर्शन करें। सब लोग समसामयिक विषय को मार्गदर्शन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री माता। Thank you very much, sir,
for your valuable words and your blessings. Now, moving on, I am pleased to introduce our another special guest, Dr. Arun Garg, sir, General Secretary, IPGA. Presently, sir is General Secretary of the Indian Pharmacy Graduate Association, Joint Secretary, Indian Pharmaceutical Congress Association, and founder member of IPGA Welfare Trust. Sir has around 35 years of experience in academics, and he has also served as Assistant Director, All India Council for Technical Education, New Delhi for 3 years. Presently, he is serving as Dean, School of Medical and Allied Sciences, K.R. Mangalam University, Gurugram. He was awarded as Dr. B. Mukherjee Award for Best Paper in the Indian Journal of Pharmacology. He was also conferred with Hamdard National Foundation Research Award for his research on Sankara. He also bagged Gold Medal Award for standing the first position in M-Pharm Pharmacology at the University of Delhi in the year 1986. Sir is also a recipient of the prestigious Young Teacher Award by the Society of Pharmaceutical Education and Research in the year 2012. He is the recipient of IPGA Professional Excellence Award 2013 and Fellowship Award 2014 by the Indian Pharmacy Graduate Association. He has guided number of students in their M.Pharm and PhD research work. He has published several research papers in journals of national and international repute. Now, I would request Dr. Arun Garg, sir, to address the gathering. So please, over to you. Good morning to you all. This is Dr. Arun Garg. Greetings from Indian Pharmacy Graduate Association and K.R. Mangalam University. First of all, I would like to thank the host for providing me the opportunity to speak to the young delegates and teachers of the Madhya Pradesh especially and all other participants from the other universities and other states. I congratulate, first of all, Dr. Mantu Patel to be the youngest President of Pharmacy Council of India and assures him that the Indian Pharmacy Graduate Association is going to support you in all deeds and whatever work you as a national agenda, we will do that with honesty, with integrity. Your organization is also welcome Dr. Atul Nasa, my friend, Dr. Karnaka Shukla, my friend from Indore, and now is the president of Madhya Pradesh Indian Pharmacy Graduate Association. I liked 2-3 things. I will not take much time. First of all, the director of the institute has said that we want to make the campus green. I also want that every delegate who is attending this conference kindly grow one tree in your house or in your neighborhood so that the environment becomes green and we can support the global environment. The other thing which I wanted to say is that Indian Pharmacy Graduate Association is a national body with several international affiliations. I want that members from the Madhya Pradesh and adjoining Chhattisgarh, all the students, postgraduate students and final year students, please join Indian Pharmacy Graduate Association by becoming its life member. Indian Pharmacy Graduate Association is a national body with
good objectives and very transparent and very social and very supportive to all the institutes and members. The last thing which I want to address to the students, the shlok that Udyamen eva siddhanti karyani na manortha nahi suptasya singhasya pravishanti mukhe migra. So it says that even the lion has to struggle a lot for getting killed a deer. So he has to work a lot, and you also have to work a lot. And IPGA and the teacher fraternity is there to guide you. Thank you so much. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you very much, sir, for your kind words. Now, moving forward, I'm delighted to introduce our guest of honor, Dr. Atul Nasa, sir, President, Indian Pharmacy Graduate Association, New Delhi. Sir is the President of the Indian Pharmacy Graduate Association and Managing Trustee of IPGA Welfare Trust. With more than 25 years of experience, Sir is the head of the Office of the Drug Control Department with the government at the National Capital Territory of Delhi. He is a member of the Drug Consultative Committee and also a member of the National Pharmacy Council. As Deputy Drug Controller with the charge of controlling and licensing authority at the Drug Control Department in Delhi government, he has been awarded the Best Drug Control Officer Award 2017, instituted by the All India Drug Control Officers Confederation. He has also been accorded the Fellowship of Indian Pharmaceutical Association, considering the he took entire professional trajectory in the field of pharmacy and drug regulation. He has participated in various national and international conferences on pharmacy and related fields. Now, I would request our guest of honor, Dr. Atul Nasa, sir, to please address the gathering. So please, over to you. Good morning, and thank you, Dr. Rekha Best, for a nice introduction. Very Honorable Director General Shri Arun S. Bhatnagar-ji, youngest and dynamic President of Pharmacy Council of India, Dr. Montu Patel, my friend Dr. Arun Garg, General Secretary of Indian Pharmacy Graduate Association, Dr. Karnakar Shukla, the President, IPGA Madhya Pradesh Branch, Dr. Dinesh Mishra, Principal, Indore Institute of Pharmacy, Dr. Pankaj Dixit, the Professor and Head, Indore Institute of Pharmacy, Dr. G.D. Gupta ji, other faculty members, dear students, and speakers of the day. At the outset, my heartiest congratulations to Indore Institute of Pharmacy that they have conducted this 2 days e-conference on translational research for Nano Medicines along with IPGA, supported by All India Council of Technical Education in the beautiful campus, that is green campus of IIP. I was listening to the speech of Honorary Director General. See, what we have seen during this last 2 years, pandemic time of COVID-19. And during this journey of 2 years, it has given a lot of messages to all of us, particularly to the people or the professionals working in the field of pharmaceutical industry, in quality control, in quality assurance, in research and development, in hospital pharmacy, in community pharmacy, in clinical pharmacy, in marketing, in regulations,
and so on. And this pandemic time, we have seen a lot of challenges for the availability of life-saving drugs or COVID management drugs. I take example here, the issue of remdesivir injection, the issue of tocilizumab injection, issue of amphotericin B injection for black fungus or mucormycosis, then all other life-saving drugs like azithromycin, hydroxychloroquines, PPE kits. But my hats off to each and every pharmacist working in different spheres of pharmacy profession, that they worked very hard during the pandemic time, and they have shown the availability of each and every life-saving drugs to all the consumers in the country and into the world. Translational research is helpful for the development of new vaccines, for new pharmacotherapy. Now see, during this pandemic time, when there was a huge hue and cry that there should be some vaccine, my special thanks goes to Bharat Biotech Limited and Serum Institute of India for developing Covaxin and Covishield. And all credit goes to the Office of Government of India, CDSCO, Drugs Control General of India, that the fast track approval was given for the manufacture of this Covaxin and the Covishield vaccines. And today, entire world is looking after India. India is the pharmacy of the world. We are exporting 60% of our formulations to the entire world. In the first pandemic, we have seen hydroxychloroquine. When there was a huge demand for hydroxychloroquine, the then President of the United States of America, he requested our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, that they want hydroxychloroquine. So we supplied even hydroxychloroquine to entire world. But challenge was import of APIs, active pharmaceutical ingredients. There was the acute shortage of APIs because we were dependent on China. So this pandemic has given the message to the API industry, to the pharmaceutical industry, that we should not be dependent on other countries. And now today, our API industry, formulation industry are very strong, and that message has given to us that we should not depend on other countries. Atma self-dependent Bharat, Atmanirbhar Bharat. So apart from that, Nano Medicines, they are playing a very important role in prevention, in diagnosis and treatment of disease. I was listening to the speech of Honorable Director that lifestyle diseases, students, what they have to do, cancer, diabetic, hypertension, all these lifestyle diseases are due to our behavior. In his speech, he has given 15 points agenda that advise to students: positive attitude, meditation, control of mind, powers of thoughts, and so on. So we have to understand, particularly the young generation, that whatever the advice given by the Honorable Director, they are very relevant in our day-to-day activities. Apart from that, he has given the reference of Green Club with 5 objectives: organic vegetables, water harvesting, say no to plastic. This is required. And I will not take much time. The eminent speaker invited for this conference, I know Professor N.K. Jain. When I was teaching in Delhi College of Pharmacy, he joined DIPSAR, now known as DIPSRU University, as a principal. Very respected Professor N.K. Jain ji, Dr. Pradyum Kumar Mishra, Dr. Sanjay Kumar Jain, Dr. Sanyog Jain, Dr. Rakesh Kumar Tigade. All they will be speaking on the relevant theme of the conference of Nano Medicines. And I hope the deliberation from this conference, particularly to the young scientists, young students, academics who are participating in this conference, will be helpful in coming way to see their future. With these remarks, my special congratulations to Indore Institute of Pharmacy, and special thanks to Dr. Dinesh and Dr. Karmakal Shikla for inviting me to this conference as a guest of honor. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your valuable words. Now, moving forward, it's my immense pleasure to introduce our today's chief guest, Dr. Montu Kumar Patel, President, Pharmacy Council of India.
Dr. Montu Kumar Patel is President, Pharmacy Council of India, New Delhi. He is the youngest President of Pharmacy Council of India. Sir is also President of Gujarat State Pharmacy Council, and recently, under his leadership, Gujarat State Pharmacy Council became the first paperless registration council of India. Sir is also an executive member of the Ahmedabad Chemical Association, and he is also a state conveyor, Youth Development Cell, Bharatiya Janata Yuva Morcha, Gujarat Pradesh. Now, I would request our Honorable Chief Guest, Dr. Montu Kumar Patel, sir, to address the gathering with his remarkable words. So please, over to you. Thank you, madam. Good morning to all guests. Sri Arun Bhatnagar, Director of IIST, our Honorable Dr. Atul Nasaji, President IPGA, also Executive Member of PCI, Dr. Arun Garg, General Secretary of IPGA, Dr. Karunakar Shukla, President IPGA Madhya Pradesh, and coordinator of this event, Dr. Dinesh Mishraji, Dr. Pankaj Dixitji, and eminent speaker, Professor N.K. Jain, Dr. Pradyuman Kumar, Sanjay K. Jain, Sanyug Jain, and Rakesh जी. आज का जो टॉपिक है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट, जो इंदौर की इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी का जो टॉपिक सिलेक्शन है, मुझे लगता है इस कंट्री में अभी नीड है, ऐसा टॉपिक आज सिलेक्शन किया है कि ट्रांसलेशन ऑफ रिसर्च ऑफ नैनो मेडिसिन्स. तो मेरा भी पीएचडी का टॉपिक वही था कि नैनो मेडिसिन ऑफ रिल्पीवेरिन, जो एंटी कैंसर और एचआईवी सभी जगह मल्टीपल यूज है उसका. तो मैंने भी पहले से ही नैनो पार्टिकल्स, नैनो मेडिसिन में काम किया हुआ है पीएचडी में. तो मुझे लगता है अभी जो देश का आने वाला समय है, अभी का जो समय है आफ्टर कोरोना, वो पहले से ही नैनो मेडिसिन पे ही था. कि बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जितने भी हम इंडिया में नहीं बनाते, वो पूरे आउट ऑफ इंडिया बनते हैं, वहां पेटेंट होती है, वहां सारा रिसर्च होता है. पर इंडिया में इसका कम पेटेंट, कम रिसर्च होता है. सारा पेटेंटेड मॉलिक्यूल एक्सपायर होने के बाद हम इंडिया में उसको बनाने लगते हैं. तो मुझे लगता है अभी जो देश की, भारत की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी इस पूरे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गया, बाद में फार्मेसी को इतना प्रमोट किया है. तो मुझे लगता है कि नैनो पार्टिकल्स, नैनो मेडिसिन, बहुत सारे इतने टॉपिक है जिसमें हमने इंडिया में कभी काम ही नहीं किया है, सब फॉरेन कंट्री करती है. तो मुझे लगता है इंडिया के फार्मासिस्ट को इस पे सोचना चाहिए. और बहुत सारे एपीआई, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो भी इधर हम नहीं बनाते, वो भी हम इंपोर्ट करते हैं. आपको पता हो तो वैक्सीन का ही ऐसा ही हाल है कि हमने वैक्सीन बनाने के लिए भी इनिशियली इंपोर्ट किया था सारी चीज. और बहुत सारे जो कोरोना में जो महंगे इंजेक्शन थे, टॉसिलिजुमैब से लेके सारे इंजेक्शन, वो भी हमने इंपोर्ट किए थे. तो मुझे लगता है कि इंडिया में अभी नीड है और इसका रिसर्च इंडिया में होना चाहिए. ऐसी कॉन्फ्रेंस करके सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स, सारे रिसर्चर को प्रमोट करना चाहिए. और आने वाले समय में फार्मेसी काउंसिल इंडिया को भी ऐसी एक प्रमोशनल एक्टिविटी शुरू करनी चाहिए. और उसके लिए हम एग्जीक्यूटिव मीटिंग और सेंट्रल काउंसिल मीटिंग में इसका प्रपोजल डालेंगे. और सारे, क्योंकि बहुत दिनों से फार्मेसी काउंसिल इंडिया से कोई प्रोग्राम होता ही नहीं, तो मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म पे एक उचित रहेगा कि अब भारत में फार्मेसी काउंसिल इंडिया भी सारे फार्मासिस्ट को प्रमोशन के लिए ऐसे प्रोग्राम करवाएगी और अच्छा काम रिसर्च के लिए हम उनको प्रमोट करेंगे. हमारे बहुत सारे टीचर्स जो पैटर्न करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पैटर्न के लिए अप्लाई करते हैं, वो पैटर्न कहीं इंडस्ट्री स्केल पे नहीं ले जा पाते हम. आप सभी को पता है कि किसी का इंडस्ट्री के साथ एकेडेमिया और इंडस्ट्री का बहुत सारा गैप चल रहा है अभी.
तो इसके लिए भी मुझे लगता है फार्मेसी काउंसिल इंडिया, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज का टॉपिक नैनो मेडिसिन है, उसको आगे ले जाना है, तो उसके लिए भी सालाना 2 बार हम एक इंडस्ट्री और एकेडेमिया की मीट करेंगे, जिसमें जिसको भी पेटेंटेड मॉलिक्यूल हो, जिसका रिसर्च है, उसको इंडस्ट्री स्केल पे कैसे ले जाना है, उसके लिए भी हम काम करेंगे। और बहुत सारे हमारे पीसीआई के मेंबर नासा जी हैं, बहुत सारे ड्रग कंट्रोलर है, बहुत सारे सीनियर एकेडमिशियन है, बहुत सारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं। तो मुझे लगता है सब लोग एक टीम बना के हम काम कर रहे हैं, तो आने वाला जो फार्मेसी का फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा है। और अभी लगातार मिनिस्ट्री में भी मीटिंग चल रही है, जिससे फार्मेसी का डेवलपमेंट हो, ग्लोबली डेवलपमेंट हो, क्योंकि नैनो मेडिसिन जैसे आप सोच रहे हैं कि होगा कि ऑल इंडिया लेवल पे करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो ये रिसर्च कहाँ करना है हमको, वो भी हमको तो पता नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता ही नहीं हम कौन से टॉपिक के रिसर्च करें, कहाँ करें, तो उसका भी प्लेटफॉर्म हमको बनाना चाहिए। ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसी लैब्स, ऐसा एनवायरनमेंट, रिसर्च का एनवायरनमेंट हमको बनाना चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेटअप हमारे गुजरात में भी एक किया है कि जिसमें कोई भी स्टूडेंट आके रिसर्च कर सकता है, उसका कोई भी पैसा नहीं देने का। जब भी वो रिसर्च इंडस्ट्री स्केल पे जाएगा तो वो उनको एक गुडविल मिलेगी, जो इंस्टीट्यूशन ने रिसर्च किया है वैसे। तो बहुत सारे प्रपोजल हम साथ में मिलके बना सकते हैं। तो मुझे लगता है इंडस्ट्री और एकेडमिक के जो सीनियर लोगों हैं, लोग पीपल्स हैं, उनको पीसीआई में आके एक हम मीट करेंगे, कैसे स्टूडेंट, टीचर्स और इंडस्ट्री और फार्मासिस्ट का डेवलपमेंट हो। और नैनो मेडिसिन तो अभी इसेंशियल है, क्योंकि डॉक्टर भी पर्टिकुलरली आई के डॉक्टर, इवन डेंटिस्ट पर्टिकुलर उनकी भी फील्ड हो गई, पर हमारे फार्मासिस्ट की कोई पर्टिकुलर फील्ड ही नहीं है। तो मुझे लगता है नैनो फार्मासिस्ट भी हमारे नाम जाना चाहिए, ऐसा भी हमको काम करना चाहिए, क्योंकि फार्मासिस्ट का स्केल इतना बड़ा है कि पूरा ग्लोबली ग्लोबली हम बोलते हैं ना फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गया। हमने मेडिसिन एक्सपोर्ट की, तो मैं मानता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है अभी, उससे अभी तक बहुत अच्छा काम किया है हमने। तो उससे हम एवरी ईयर हम फार्मासिस्ट को भी तो एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं। बहुत सारे फार्मासिस्ट यूएसए, कनाडा, अमेरिका सब जगह जा ही रहे हैं, तो हम तो फार्मासिस्ट भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। और हमारे जो भटनागर सर ने जो भी बोला कि जो फिजिकल फिटनेस, मेंटली, वो भी जरूरी है। लाइफस्टाइल डिजीज बहुत सारे अभी आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत सारी मेडिसिन हमने ऐसे ही ले ली बिना फार्मासिस्ट के। कोई भी प्रिस्क्रिप्शन का एनालिसिस नहीं किया, सबने पैरासीटामोल, डोलो ले ली, किसी ने मल्टीविटामिन एवरीडे खा ली, किसी ने आयुर्वेदिक मेडिसिन खा ली। तो मुझे लगता है ये सब केमिकल हमारे बॉडी में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करेगा। तो मुझे लगता है फार्मासिस्ट की इसेंशियल जरूरत है, और सरकार भी इसको समझ चुकी है आफ्टर कोरोना। तो इसीलिए आगे जाके सरकार भी सभी जगह क्लिनिकल फार्मासिस्ट का भी वो प्रोविजन कर रहे हैं। फार्म डे स्टूडेंट है, फार्म क्लिनिकल स्टूडेंट है, उनका भी इतना ही इम्पोर्टेंस है। तो बहुत सारा काम फार्मेसी के लिए हमको करना है। और आज की जो इवेंट इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के डायरेक्टर और उनके स्टाफ और उनके मैनेजमेंट ने जो ऑर्गेनाइज किया है, और मुझे, क्योंकि मेरा पहला कॉन्फ्रेंस आप लोगों से शुरुआत हुआ है, तो मुझे लगता है आगे जाके भी अच्छा काम होगा फार्मेसी के लिए। और टॉपिक भी मेरा ही है, क्योंकि मेरा पीएचडी का भी टॉपिक वही है, तो बहुत सारा हम उसमें भी काम करेंगे। और फार्मेसी काउंसिल इंडिया को भी कैसे रिसर्च ग्रांट पीसीआई दे पाए, ऐसे सेमिनार करने के लिए, उसके भी हम चर्चा करेंगे। और आप लोगों ने जो शुरुआत की, क्योंकि हमारे जीडी गुप्ता जी भी है, वो भी हम एक बार पंजाब में मिले थे, तो बहुत सारे लोग परिचित है इधर, बहुत सारे पार्टिसिपेंट भी परिचित है। तो सभी लोगों का धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और आगे जाके आपका सहयोग जरूरी है फार्मेसी के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, एकेडमिशियन नहीं हूँ, पर मैं एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। इतना तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम से हम पीसीआई से रिजॉल्व करने का मैक्सिमम ट्राई करेंगे, मैक्सिमम फार्मासिस्ट को बेनिफिट मिले, ऐसा प्रयत्न करेंगे गवर्नमेंट लेवल पे और प्राइवेट सेक्टर में भी। तो आपका धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, sir, for your kind words and your best wishes. Now, before ending this inaugural session, our Honorable Director General Shri Arunas Bhatnagar, sir, wish to say few words. So, sir, I would request you to
Please, over to you. बहुत ही प्रसन्नता हुई कि जिस तरह से हमारे प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया। मैं उसी में थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ जो मेरे छात्रों की और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बिल्कुल जिसे काफी मैं उससे क्षुब्ध हूँ। वो ये है कि जो आज हमारे बी फार्मा में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, उनके उनके जो परसेंटेज है वो 75% एंड अबव है, और 4 साल के बाद उनको जो नौकरी मल्टीनेशनल्स ऑफर कर रही है, जो इंटर्नशिप उनको दे रही है, वो 10,000 12,000 मिनिमम वेजेस से भी कम। तो मेरा आपसे बहुत पुरजोर ये अनुरोध है, विशेष अनुरोध है कि हमें इस दिशा में बहुत जरूरी कार्य करना है, और ये बात हमें उच्च जहां तक हो सके ये बात पहुंचानी। मैं उन सब छात्रों से, जो देश के जो छात्र बी फार्मा कर रहे हैं, उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाना चाहता हूं कि उनको राइट दिया जाए प्रिस्क्रिप्शन लिखने का। 4 साल आप उनका 5 साल कर दीजिए, लेकिन कम से कम उनको यह अधिकार तो प्राप्त हो कि वो प्रिस्क्रिप्शन लिख सके। आज वो बी फार्मा करने के बाद अगर उसे 12,000 मिलेगा तो क्या होगा? तो इस पर हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को, आपके जुझारू और यंग नेतृत्व में, इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए, और हम पूरी शक्ति के साथ आपके साथ हैं और पूरा समर्थन है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है। क्योंकि आज जब मुझे वो छात्र मिलते हैं, उनके 90% मार्क्स उनके हैं, और वो जहाँ रहे हैं, फिर कौन से उद्योग में जा रहे हैं, वो टेक एजुकेशन उसको ज्वाइन कर रहे हैं। अभी ठीक है, हमारे यहाँ से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ 10 लाख रुपए पर बाईजूस में, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि 20 साल का बच्चा बाईजूस जा रहा है, वो सिप्ला में क्यों नहीं, वो मल्टीनेशनल्स में क्यों नहीं जा रहा, और वहां उसको जो उसका यथा योग्य स्थान है वो प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा। तो हमें इस दिशा में बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। जो छात्र हैं 4 साल का, यही मैंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से भी कहा कि भाई आज हमें बच्चों को यही सिखाना है कि हाउ टू डील विद वन सेल्फ एंड हाउ टू डील विद अदर्स। यही 2 सबसे बड़े क्राइटेरिया हैं जो आज हमको सबको सीखना है, जो प्रधानमंत्री जी का भी हमारा मूल मंत्र है कि भाई जो अपनी संस्कृति है उसके कारण हम अपना आत्म विकास कैसे कर सकें, और आत्म विकास के साथ साथ हमारी जो स्किल है जिससे कि हम बाहर की चुनौतियों को, बाहर के जो हमारी परेशानियां हैं, उनको हम सहजता से कैसे ले सकें। क्योंकि यही हमारा छात्रों को मेरा विशेष अनुरोध रहता है कि भाई आप ये मत सोचिए कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। जीवन में समस्याएं तो आती हैं और आएंगी और आनी चाहिए। हमें ये आना है कि हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम्स। तो अक्सर हमारा एम्फेसिस यही रहता है कि, और उनको मेरा रहता है कि इधर उधर की बातों से तो खामोशी ही बेहतर है, या कुछ ऐसी बात करो जो खामोशी से बेहतर। हमारे छात्रों को हम यही सिखाते हैं कि भाई कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती। तो हाउ टू कम्युनिकेट, बिकॉज द पावर ऑफ वर्ड्स, द पावर ऑफ, क्योंकि हर वर्ड में एक वाइब्रेशन है। क्योंकि आज ये सिद्ध हो चुका है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन है कि हर चीज वाइब्रेट करती है, तो हमारे शब्द भी वाइब्रेट करते हैं, और उसके पीछे जो संकल्प है वो भी वाइब्रेट करता है। तो आज इस पूरे इतने एमिनेंट स्पीकर्स यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल से देश के सभी प्रमुख विद्वजन यहाँ पे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, फार्मेसी का ईबीसी भी नहीं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर जानता हूँ कि फार्मेसी की दिशा क्या है, और दिशा, इसीलिए हम आज इसी चीज पर एम्फेसिस दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, नैनो टेक्नोलॉजी पर, और पूरी तत्परता के साथ हम आधुनिक अद्यतन जो भी इसमें अनुसंधान हो सकता है उसके लिए हम तैयार हैं, तत्पर हैं। हमारा फार्मेसी कॉलेज कि हम इसमें लेटेस्ट रिसर्च करें और अपने स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के लिए ऐसा तैयार करें कि ये उनकी प्रयोगशाला हो। मैं उनसे पूछता हूं, आप ये बताइए आपको कैसा स्टूडेंट चाहिए, हम वो बनाए, वो देंगे। हम आपके उद्योग के अनुरूप अपने छात्रों को ढालेंगे, और ताकि, बल्कि हम तो ये सुझाव दे रहे हैं कि वहां के लोग सबेस्टिकल लीव लेके हमारे यहाँ आए इंडस्ट्री के, और हमारे प्रोफेसर सबेस्टिकल लीव लेके इंडस्ट्री जाएं, ताकि वहां देखें कि वो कैसा काम हो रहा है, और आपस में एक समन्वय हो इंडस्ट्री का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का और सोसाइटी का। इन तीनों का जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक कार्य नहीं चलेगा कि सोसाइटी की क्या जरूरत है, इंडस्ट्री की क्या जरूरत है, और एकेडमिया की क्या जरूरत है। तो इसी आशा के साथ मैं अगेन दोबारा से वोट ऑफ थैंक्स देंगी रेखा, लेकिन मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ अपने चीफ गेस्ट का, डॉक्टर पटेल का, डॉक्टर अतुल नासा साहब का, डॉक्टर अरुण गर्ग साहब का,
डॉक्टर करुणाकर शुक्ला जी का, और हमारे सारे जो एमिनेंट स्पीकर्स यहाँ आने वाले हैं उनको मैंने पहले भी सुना है। डॉक्टर एन.के. जैन साहब हैं, संजय कुमार जैन साहब हैं, रुदन मिश्रा जी को अभी शायद नहीं सुना, लेकिन बाकी संयोग जैन, डॉक्टर राकेश कुमार जी, आपका स्वागत है। और आप लोग हमारे प्रांगण में आइए, ग्रीन कैंपस में आइए, यहाँ की ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाइए, क्योंकि हमने 9 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग की हुई है और आपको शुद्ध धनिया तोड़ के यहीं पर चटनी खिलाई जाएगी। तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। Thank you. Very much, sir, for putting our biggest pain area before our honorable president, sir, and definitely we are hoping for the best solution for this particular pain area. Thank you very much, sir, once again. Now, in the end of this inaugural session, I would request Dr. Pankaj Dikshit, sir, HOD, Department of Pharmacology, Indore Institute of Pharmacy, and co-coordinator of this event, to convey vote of thanks. Sir, please, over to you. Thank you, Rekha Madam. Good morning to all the dignitaries present in the inaugural ceremony. It is indeed a matter of great honor and privilege to me, Dr. Pankaj Dikshit, co-coordinator for the conference and professor at Indore Institute of Pharmacy, to propose a formal vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to the Almighty Lord Mahakal for making today's occasion a resounding success, considering the short time that we had for preparations. First and foremost, I thank our chief guest, Dr. Montu Kumar Patel, President, Pharmacy Council of India, who, despite his busy schedule, found time to grace the inaugural ceremony. Sir, we look forward for the progress of pharmacy profession under your leadership. Thank you, sir. We are grateful to the guest of honor, Dr. Atul Nasa, President, National Branch, Indian Pharmacy Graduates Association, and today's special guest, Dr. Arun Garg, sir, General Secretary, National Branch, IPGA, for their continuous support during the planning of this event. We thankfully acknowledge the financial support given by IPGA MP State Branch and the President of IPGA MP State Branch, Dr. Karunakar Shukla, for his unstinted support in materialization of this conference. We are grateful to AICTE for providing the financial support for conduct of this conference, and we owe our special thanks to Dr. Neeraj Saxena and Dr. Shrishel Kambli, office bearers at IDC, for their support. I thank our respected and honorable Director General, sir, and patron for this conference, Shri Arunesh Bhatnagar, sir, for his untiring support, constant encouragement, and visionary guidance that has constantly encouraged us to strive hard for academic as well as research excellence. I am in debt to all the eminent speakers who shall be addressing the delegates registered for the conference, along with the chairpersons of scientific sessions, for sparing their valuable time. I thank all the principals of different pharmacy colleges in Indore that have joined the inaugural ceremony, along with Dr. Keshav Patidar, Principal IST, and Dr. Manish Mittal, Principal IMR, for their support. My heartfelt thanks to all the head of the departments and faculty members of our institute for their valuable contributions and constant encouragement. I owe special gratitude to our PRO, Mr. Ranjan Poddar, for all the designing work done for the conference, and Mr. Nilesh Naik and his team for technical support, along with all the institutional staff for their continuous hard work. Last but by no means the least, I thank all the delegates who have registered for the conference and shall be participating in the scientific sessions for their overwhelming response. Once again, I thank you all for your attention. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. So now we shall start with the scientific session, and our speaker of the day, Dr. Sanjay Kumar Jain, sir, has joined.